So yesterday we learned these functions. Like append function they come. Okay. Append function will add the elements like directly it will add like this. df1 df2 अच्छा append तो duplicate ही हो गया deprecated function ठीक है इसको भूल जा no worry. But similar function that we have that is concat. Concat का main purpose क्या है? It will add one element over the another element. One data frame over the another data frame. ठीक है? So so you can add via column. You can add via uh, what? Like rows also. ठीक है? Column and rows also. So if you add via column or row, it will look for similar columns and rows. Say we had this column similar, so you took all the values, बाकी values उसने उसके हिसाब से assign कर, ठीक है? Then यहाँ पर चारों की चारों different columns थे, so it created four different columns, and you can also add via this one जिसमें rows common pick करे जाए, ठीक है? Common rows pick करे जाएंगे. Then we learned about joins. Okay. So inner join meaning it will consider all the it will consider all the middle area. Okay. जो भी common things हैं that will be considered in the inner join. Okay, that will be considered in the inner join. So it only keeps common rows only for axis 1. ठीक है for axis 0 it will keep common columns only. So this is a common column, and otherwise joined outer will consider all the elements, and similarly for here also all the elements. ठीक है for axis 1 and 0. For axis 1 and 0 it will be same. ठीक है it will be same. So now there was one more function, merge. One second. तो आज हम सीखेंगे मर्ज डे 11 डे 10. And day 10. Okay, let's try to cover most of the things in this lecture. Merge. Okay, merge. तो pandas डेटा फ्रेम्स यहाँ से उठा लेते हैं. लेट्स से ये हमारा df1 है, ठीक है? ये df1 है जो import pandas as pt, import numpy as np. Okay, now it should work. So this is our data frame 1. This is our data frame 2, right? This is our data frame 2. This should be where is data frame 3. This is our data frame 3, and this is our data frame 4. Okay. So now if I want a merged df, okay, I will say pd dot merge df on, ऐसे मैं कर सकता हूँ. pandas dot merge df1 and df2 मुझे merge कर दो किसके ऊपर,
यू हैव टू मेंशन किसके ऊपर। मर्ज में आपको बताना होगा जो आपका ये df1 है, ये df1 है और ये df2 है, इसमें से मर्ज किसके ऊपर करना है। तो आई विल से ask the number. So if I run this, I should get nothing. Why? Because you can also mention one more thing. ठीक है, you can also mention, अभी यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, आज की नंबर आ गया बट कैरेक्टर एक्स और कैरेक्टर वाई आया है। ठीक है, कैरेक्टर एक्स इसको एंड कैरेक्टर वाई ऐसे कर दिया। ठीक है, कैरेक्टर एक्स कैरेक्टर वाई। यू कैन ऑल्सो टेल हाउ। हाउ जब आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर, दैट विल बी आइदर आउटर और आइदर इनर। तो अगर आउटर बोल दोगे तो ये सारे ही कॉलम्स पकड़ लेगा, राइट। आउटर बोल दोगे तो ये सारे ही कॉलम्स पकड़ लेगा। और अगर इनर बोलोगे तो शायद ये फिर से कुछ नहीं देगा। यस, वाई बिकॉज you have joined or merged on this column only, but we have two of them common. Okay, we have two of them common. So hum can we go for multiple multiple columns? ठीक है, let's see. तो प्यार कैसा है, स्मॉल ही होगा। और जब दो चीज आएगी उसको ये कर देना, फर्स्ट आउटर किए देखते हैं, लिस्ट में डाल देना। दो एक से ज्यादा चीज आ गई उसको लिस्ट में डाल देना। Now when I run this, I will get entire data frame। दो पैरामीटर्स पे वो मर्ज करता है। ठीक है, दो कॉलम्स पे वो मर्ज कर रहा है। ठीक है, दो कॉलम्स पे वो मर्ज कर रहा है। तो ये सिमिलर सिमिलर सा इनर में भी सिमिलर वर्क करना चाहिए, राइट। इनर में भी सिमिलर वर्क करना चाहिए। तो अरे यार इनर में क्यों नहीं आ रहे। इनर में नॉट श्योर इनर में क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज इनर में ही दोनों भी कॉमन कॉलम्स आने चाहिए। कॉमन जो भी एलिमेंट्स है फ्रॉम दोज टू, दैट शुड हैव कम हियर। बट इन दिस मर्ज inner joint will not work as expected. So in for inner join inner join, the merge will return empty columns, okay, empty columns. But outer will return all the elements. ठीक है, outer will return all the elements. तो एक बार देखता हूँ मैं, inner outer तो दे रहा है। अच्छा, तो जो inner है, why it is not given? It is actually not true. So we need to think, we need to look for the data कि कैसा है हमारा डेटा। तो दिस इज माय डेटा, ओके। ये 65 to 70 है, ए टू एफ है, राइट, ए टू एफ है। अगर मैं यहाँ पर 64 कर देता हूँ एंड 72 कर देता हूँ, ठीक है, वो एरर देगा। अभी के लिए रख देते हैं, दूसरा डेटा फ्रेम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बताने की बात यह है, इनर विल लुक फॉर व्हाट, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, इनर विल लुक फॉर कॉमन एलिमेंट्स। आउटर तो दोनों भी दे देगा, आउटर तो तीनों भी दे देगा, कॉमन भी दे देगा, राइट भी दे देगा, लेफ्ट भी दे देगा। बट इनर विल लुक फॉर कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है, बट सिंस यू हैव सेड कि ऑन दिस कॉलम नेम्स, ठीक है, ऑन दिस कॉलम नेम्स, इन कॉलम्स के अंदर, inside these columns you cannot see common elements। ठीक है, लाइक रो वाइज अगर आप देखोगे तो देर इज नो कॉलम कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, so it will look for common elements in the row wise। ठीक है, in the row wise।
So let me, I think we have, mm, let's say merge pd, yeah, merge df equals to, let me give you one example जहाँ पर inner column should work. ठीक है, inner column should. So you can also write like this. You can also like this. df df1 dot आएगा merge df1 dot merge. merge किसको करना है? df3 को कर दो. ठीक है. on क्या करना है? You need to mention these two columns. df3, what, which columns? The two columns. This and this is same. Okay, this and this is same. And I will just mention how equals to outer अगर मैं करता हूँ, for example first merge here. So it will give me char नहीं है. Character इसका सेम नहीं है दोनों का. So let's do it on the same. अभी के लिए outer ही करते हैं, then inner करते हैं. Why this error came? ये एरर क्यों आया? क्योंकि df3 जो है हमारा, वेयर इज df3, यहाँ पर कैर नहीं है, कैरेक्टर्स है. ठीक है, कैर नहीं है, कैरेक्टर्स है. so that's why it gave us error. तो अभी हम बस इसके ऊपर ही चला सकते हैं, बिकॉज आज के नंबर शुड बी सेम. ठीक है, आज के नंबर शुड बी सेम. ये हो गया हमारा इनर के आउटर के लिए. बट नाउ इफ यू सी गाइस, नाउ इफ यू सी, हमारा ये है आवर df1. df2 क्या है? df3 क्या है? df3 के अंदर 71 72 73 74 है. 71 72 73 74 है. अभी भी तो कॉमन नहीं है, अभी भी तो कॉमन नहीं है. चलो इसको ऊपर इनर लगा के देखते हैं. डू वी हैव कॉमन? नो. तो आई नीड टू चेंज अ डेटा फ्रेम जिसके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो. अच्छा, df3 को मैं चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से 69 टू 75. 69. so this is my df3 now. okay, this is my df3. अभी मैं अगर आउटर चला देता हूँ, so you can see 69 and 70 are the common elements. अभी के लिए तो पूरा ही आ रहा है, because we have set outer join. when I say inner join, it will give me common elements. ठीक है, so this is where, meaning our data was not supported for this inner join, so that's why it was not there. So let me revise you again. Okay, if there is some confusion. So this is our df1. df1 में क्या है? ASCII number, character. ठीक है, 65 to 70 a to f. df2 में क्या है? ASCII number, character, same column में. okay, 71 to 75. 71 to 75 मीनिंग इसका और इसका के अंदर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है. देन df3 में कैरेक्टर ASCII नंबर तो सेम है, मीनिंग द कॉलम में, कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर मीनिंग कॉलम नेम इज डिफरेंट. ओके, column name is different, but you can see 69 70 are similar. 69 70 are similar. Then df4, let's not talk about it right now. So my first example was pandas merge df1 df2 on ASCII number. ASCII number पे merge कर दो. outer, like how? on outer क्या दे देगा हमें? it will give me this common and basically दोनों भी data frames से सारे ही items दे देगा. so this is how you get it. okay, this is how you get it. and when I say inner, तो df1 में एंड df2 में कोई कॉमन चीज है ही नहीं इन विथ रिस्पेक्ट टू रोज. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रोज. तो हमने क्या कर दिया? df3 का एग्जाम्पल ले लिया.
df3 का। तो df3 में हमारे ये 2 rows कॉमन थे। So when you say inner, you will get only common element. When you say outer, you get every element. ठीक है, you get every element. You get every element. So here yesterday also we saw inner and outer, but here you can also work with left and right join. If I run this, what will I get when I run this? What will I get when I say left join? ठीक है, when I say left join, I will get left element. ठीक है, ये सारे मिल जाएंगे मुझे, प्लस I will get common element from right join. ठीक है, so I will get common element from right join. So left joint is my basically left data frame is my df1, right data frame is df3. So df1 की सारी चीज आगे, प्लस कॉमन जो है वो भी आ गया। ठीक है, कॉमन जो है वो भी आ गया। एंड सिमिलरली if I say right, okay, if I say right, what will be there? This common elements will be there plus df3 के सारे एलिमेंट्स आ जाने थे। ठीक है, राइट में क्या करूंगा मैं, राइट जब करूंगा ये पूरा आ जाएगा प्लस ये कॉमन भी आ जाएगा। ठीक है, कॉमन भी आ जाएगा। रन दिस, देखो ये कॉमन चीज आ गई यहाँ पर, एंड मेरा df3 कंप्लीट आ गया। ठीक है, माई df3 वुड कम कंप्लीटली। राइट, ये समझ में आया है? किसी को कुछ इश्यू, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट गाइस? क्लियर? कूल, ओके, कूल, क्लियर। ऑलराइट, पीपल फ्रॉम ऑरेंज, कुछ तो इशू चल रहा है फ्रॉम द स्क्रीन। क्या चल रहा है? रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या? वन सेकेंड, वन सेकेंड गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ। राइट, दिख तो रहा है। हो रहा है, रिकॉर्ड तो हो रहा है। ठीक है, आई थॉट देयर वाज सम इशू। एनीवेज, कूल, क्लियर, क्लियर, क्लियर। ऑलराइट, so this bring us to the next topic. This bring us to the next topic. तो pandas की एक दो लास्ट फंक्शन कवर कर लेते हैं, then we will go for series and we can close this pandas function for all. ठीक है, so the next function is assign. ठीक है, the next function is assign. So assign function uh, assign function pandas में अलग वर्क करेगा। ठीक है, is used to add the columns in data frame. ठीक है, it is used to add the column in the data frame. मीनिंग क्या है? Let's say I have a df. ठीक है, so I will say pandas dot data frame। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने कुछ पास ही नहीं किया। ठीक है, आई हैव पास नथिंग, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एम्प्टी डेटा फ्रेम मिल जाएगा। राइट, एम्प्टी डेटा फ्रेम मिल जाएगा। तो लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, ls की नाम से एक लिस्ट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, देन आई विल से आई विल से df इक्वल्स टू df डॉट असाइन। ठीक है, df डॉट असाइन, एंड उसके ऊपर आई विल ऐड रैंडम से दूंगा इक्वल्स टू रैंडम, मतलब ये कॉलम नहीं है। ठीक है, रैंडम इक्वल्स टू लिस्ट। ठीक है, रैंडम नंबर्स
equals to list. So if I run this, I will get this random column name, मतलब कुछ भी लिख लो यहाँ पर, ठीक है, कोल इक्वल कोल वन ऐसे भी लिख दो, कॉलम वन तो भी आ जाएगा, ठीक है, कॉलम वन 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4। तो कुछ इस तरीके से we can add a column using assign function। तो और कौन सा तरीका था, हमने और एक सीखा था, if you remember, हमने और एक कौन सा तरीका सीखा था, जैसे कॉलम टू मुझे डालना और उसके अंदर ये एलिमेंट्स डाल देना। इफ आई रन दिस आई विल गेट अनदर कॉलम वन कॉलम टू, ओके, कॉलम वन कॉलम टू। So this is how you can, like, let's be, you had an empty data frame, you had an empty data frame using the assign function। आपने क्या कर दिया, एक कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर देना फर्स्ट, एंड देन जस्ट ऐड whatever data you want to add, ठीक है, इन द डेटा फ्रेम। और कॉलम टू ऑल्सो, कॉलम टू तो डायरेक्टली हम कवर कर क्लियर मतलब बना लिया, कॉलम थ्री भी मैं ऐसे ही ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, यू कैन ऐड कॉलम थ्री और इसके अंदर मैं हर एक के सामने एक वन डाल देता हूँ, ठीक है। इफ आई रन दिस आई विल गेट कॉलम थ्री एज वेल, ओके, आई विल गेट कॉलम थ्री एज वेल। एंड once you learn about adding a column, there can be one more function which can pop out, which can pop out the column, okay। So if you say df dot pop column 3, what you said, df dot pop column 3, column 3 को pop out कर दो, so you can see df3 का बलि चल गया, df3 is gone, ठीक है। So there are two functions, first function is assign। assign function क्या करेगा, column 1 को whatever data you assign it will assign, column 1 को data assign कर देगा data frame के अंदर, any empty data frame should be there, ठीक है, empty data frame should be empty or whatever। Then you created a column 2 like this, we have learned this in the previous lecture, column 3 like this, and when you say pop, df dot pop कर दो मेरा column 3 को, so it will just pop out the columns, ठीक है, pop out the column। So whichever column name you mention, it will just pop out, ठीक है, whichever column name you mention, it will pop out। And the next function comes is value। वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू या वैल्यूज रहेगा, वैल्यूज फंक्शन क्या करेगा, so it will convert the data frame into a matrix format, ठीक है, तो डेटा फ्रेम को क्या कर देगा ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहाँ पे देखा था हमने, वी लुक्ड इट इनटू numpy, ठीक है, numpy array, रिमेंबर 2 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल, so it converts data frame into matrix format, ठीक है। वो कैसे होता है, लेट्स ट्राई एंड सी हाउ दैट हैपेंस, ठीक है। so let me say df और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम वन का पहले, ठीक है, लेट्स सी, मैंने कॉलम 4 ऐड कर दिया इस बार, ठीक है, कॉलम 4 ऐड कर दिया, कॉलम 4 लुक्स लाइक, अच्छा ठीक है, लेट्स कम टू दिस डायरेक्ट। तो आई विल से numpy array मुझे चाहिए, ठीक है, numpy array चाहिए, दिस इज अ वेरिएबल, ओके, दिस इज अ वेरिएबल। आई विल से df डॉट वैल्यूज, ठीक है, ये जो मेरी डेटा फ्रेम अबव, मेरी डेटा फ्रेम कौन सी है, लेट्स मी जस्ट ब्रिंग माय डेटा फ्रेम, माय डेटा फ्रेम लुक्स लाइक दिस, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2। आई विल से any variables equals to df dot values, what I am saying, df के सामने values, if I run this I will get 2 by 4 का मैट्रिक्स, ओके, आई विल गेट 2 by 4 का मैट्रिक्स। अगर और एक कॉलम रहता तो और एक कॉलम यहाँ पर आ गया रहता था, राइट, वन मोर कॉलम वुड हैव बीन देयर, ओके। तो इफ आई ऐड वन मोर कॉलम, कहाँ पे ऐड कर दो, डी एफ, अरे कॉल 4,
ठीक है, column 4 and I will mention, let's say, one. If it's the same numbers I will let me mention because मुझे वो बात में काम आने वाले हैं. So this is how my looks data frame. If I say values, I will get I will get call an array like this. Okay, I will get the array like this. Okay, I will get the array like this. So any question till now, guys? So how many things we have seen? First, we have seen assign. Assign will assign a value to a column in the data frame. Assign a value to a column in the data frame. Then we have also seen how to add more columns. More columns. We have also seen how to remove the columns entirely. Okay, how to remove the column. Similar function कौन सा और एक function करता है? Drop ड्रॉप फंक्शन एक करता है, सिमिलर चीज करता है. ठीक है, इट विल जस्ट ड्रॉप द एलिमेंट्स बट नॉट द कॉलम, बाय द वे. ठीक है, इट विल ड्रॉप द एलिमेंट्स बट नॉट द कॉलम. सो पॉप विल रिमूव योर डिलीट योर कॉलम इंटायरली. वैल्यू क्या करेगा, आपका जो भी डेटा फ्रेम है इट विल कन्वर्टेड इनटू एन एरे. सो व्हाई डू वी डू इट, व्हाई डू वी डू इट, व्हाई डू वी कन्वर्ट इनटू एरे? बिकॉज let's say you have some operation वो बस array में ही करा जा सकता है. So that can be done using, जैसे value में convert कर दो, array में convert कर दो, and you can go on work on it. ठीक है, work on it. So any confusion? Yes, no, yes, no, yes, no, guys. छोटा मोटा confusion? Someone from the YouTube says, bro, is the Jupyter notebook you are? Yes, that is Google Colab. Shekhar Govda. Hello. So that's a Google Colab Jupyter notebook. Google Colab Jupyter. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं Google Colab. ठीक है, इसको कैसे कैसे करना है, आप बस गूगल पे चले जाओ और Google Colab डाल दो. You will get this here. यहाँ पर if you click on, you will get this notebook open. बस यहाँ पर you just have to say new notebook and you are good to go. बस login कर देना first. ठीक है, login as in Google login बस. You will get this one. Any confusion? Any yes, no, guys? Because I will get idea. Should I go ahead or not? Yes, no, no, yes. Little bit, cool. Little bit. Particularly, meaning ये बस कॉलम, ये बस फंक्शंस है जो डेटा फ्रेम पे हम चलाते हैं. ठीक है, डेटा फ्रेम पे क्या चला रहा है? I had this empty data frame. Then I've I've taken this, मेरा ये empty data frame था. Okay, display दिया. When I run this, this was my empty data frame. यहाँ पर दिख भी नहीं रहा वो. ठीक है, this was my empty data frame. Then what happened? I took this list one, the LST, and then I have added this LST in the column using this assign function. So assign function क्या करेगा? It will create a new column. Okay, it will create a new column. And column 2 या फिर जो भी अदर चीज है, this we have seen in our previous lecture. ठीक है, so make sure you are practicing so that यहाँ पर आप बने रहोगे. Then pop function क्या करेगा, बस delete कर देगा whichever that I had this column 1, column 2, column 3. So I said df dot pop column 3, तो मेरा column 3 चलेगा. There is no column 3 now. Values क्या करेगा, जो भी आपका मैट्रिक्स है, जो भी आपका डेटा फ्रेम है, it will convert it to matrix. So this is we have learned in NumPy array. Okay, NumPy array. So if you want to revise NumPy array, बस इधर playlist पे चले जाओ. यहाँ पर NumPy array complete भी है. Pandas data frame यहाँ पर मिल जाएगा. Notes you will get in this GitHub library, NumPy, Pandas. Go there and WhatsApp पर हम सारी चीजें डाल रहे हैं. This is our WhatsApp group. All the links are given in the description, guys. ठीक है,
All the okay, repeat once clear. Put all the links are there in the description. Okay, someone says, bro, please again, please, one more. Ah, yes, ठीक है. Rudra Gavde. Let me explain you quickly. हर एक का एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है. Let me just give you one example of each. So मेरा df1 है now data frame. So I'm saying pandas dot data frame and display. So this is how my df1 looks like. ठीक है, df1 looks like. So now I want to add some things in it. So I will say list1 equals to np dot random है इसके अंदर random dot random teacher and I want from 1 to 10 random numbers, कोई भी 5 numbers दे दो, ठीक है. So this is my list. Okay, this is my list. So now what I will say df1 equals to df1 dot assign, ठीक है, dot assign and I will say column 1 equals to list1 कौन सा, this one, and this will get added like this will get added like this. So this is how you can add any column or anything, कुछ भी डेटा columns के अंदर आप add कर सकते हो. Okay, you can add. So there is one more way. Let's say df1 and इसके अंदर मुझे column 2 add कर दो, ठीक है. So I can also say like this या फिर मैं बोल दूँ np dot zeros कितने दे दो, 5 दे दो, ठीक है. zeros कितने दे दो, 5 दे दो. ये 5 से df1 तो 5 zeros add होके, ठीक है. All this function that we have learned in numpy, ठीक है, numpy. So कुछ इस तरीके से you can create or add new columns using assign function or directly, ठीक है, or directly. Then we have seen this pop function. Pop function क्या करेगा, what it will do. Hmm, so earlier there was these three columns, column 1, column 2, column 3. मैंने बोल दिया कि column 3 को delete कर दो, pop कर दो, pop out. So pop function will pop out the columns, ठीक है, it will pop out the columns. whichever column, अगर मैं df2 मेंशन कर दूं यहाँ पर, column 2 मेंशन कर दूं तो मेरा wait, I have to run this again. column 2 है ही नहीं हमारे पास. Cool. So now if I say column 2 ड्रॉप कर दो तो column 1 रह गया, column 3 रह गया, right, like this. And values क्या करेगा, जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसको एरे में कन्वर्ट करता है. यू कैन सी 1 5 1 5 2 6 2 6 3 7 3 7 4 8 4 8, ठीक है. तो इस तरीके से ये डेट एक एरे जनरेट करेगा. Okay, it will generate an array. So if I now say df dot values, तो ये कुछ इस तरीके से बनाएगा. Why? Because मेरा df कैसा है वो भी दिखा देता हूँ. This is df1 के साथ करते हैं. df1 कैसा है हमारा, this is how df1 is. So if I say df1 dot values, ठीक है, तो ये 4 4 3 2 1 जो भी है वो आ जाएगा, प्लस 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 0 0 आ जाएंगे. Alright, so the next function is drop duplicates. Okay, drop duplicates. ये क्या करेगा, for dropping the duplicate values, ठीक है. This is used for dropping the duplicate values. Okay, dropping the duplicate values. Alright. Done here. Rudra Gavde, no, मुझे ये समझा नहीं. If there is any specific question, we can discuss. Alright, so let's continue. If you have question, let me know. If you have question, let me know. So now,
So now for dropping a duplicate values, okay, for dropping a duplicate value. So let's create some data frame जिसके अंदर duplicates values रहेगी, ठीक है. So let me say df1, okay, df1, and I am creating a data frame. Let's say मेरे पास name है, चलो name थोड़ा complicated है, simple सा data frame create करते हैं. Okay, so let's say I have 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, all these elements I have, ठीक है, all these elements that I have. Okay, इसके बाद लेट मी ऐड वन मोर कॉलम, जैसे जैसे बी, एक अनदर कॉलम ऐड कर देते हैं. इसके अंदर नॉन सिमिलर चीजें रखते हैं, जैसे 100 200 300 400, ओके 400. लेट्स क्रिएट वन मोर कॉलम जिसके अंदर यहाँ पर भी नॉन सिमिलर चीजें रखते हैं. एग्जाम्पल, ठीक है. So let's say I have one more column. उसके अंदर I am saying 4, 4, 5, 5. 5. So now if I say df, so it will change to like this. So column 1 says 1, 2, 3, 4. Column B says 100, 200, 300, 400. Column C says 4, 4, 5, 5. Okay, 4, 4, 5, 5. Right, right. So let's understand the drop duplicates. Okay, so I am saying df, okay, df drop duplicates, okay, df dot duplicates. अभी इसके अंदर you need to mention a column name, okay, you need to mention a column name. You have to mention this keep function. So keep में there is two values. एक either you can write first or you can write last. Okay, so let me tell you why. So when you say first, sorry, ए के अंदर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज ही नहीं ली ना. लेट्स से नाउ डेटा फ्रेम लुक लाइक 1 2 1 2 4 4 5 5, ठीक है. तो नाउ डेटा फ्रेम में 1 2 एंड 1 2 इज डुप्लीकेट, राइट. कॉलम ए के अंदर 1 2 एंड 1 2 आर सेम. So when I say keep first, what it will do, it will keep this first two rows. You can see it kept this first two rows. Okay, keep this first two rows. But what if I say instead of this, if I say last, right, df dot duplicate a कॉलम में से लास्ट वाले डुप्लीकेट्स रखना, सिर्फ ये वाले, keep these, इसको सेक्रीफाइस कर दो. I run this, I will get these. Okay, I will get these. Simple है, simple है. Can we do it on, can we do it on multiple columns? The answer is yes. So let's say I said B also and keep first. So it will do something like it. सारे आ जाएंगे because हमने let's कुछ और कॉमन एलिमेंट ऐड कर देते हैं यहाँ पर. let's say 100 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, 100 एक्स्ट्रा कॉमन है इसके अंदर. So now my data frame will cut down that 100, ठीक है, 100 को सेक्रीफाइस कर दी. इसके ऊपर अगर मैं सिंपली सी चला देता तो इट वुड, again there is no, there is actually, बट अभी के लिए बी पर काम करते हैं, ठीक है. तो बी के अंदर जो मेरा, तो इट विल कंसिडर फर्स्ट ए, ठीक है, ए के अंदर जो भी डुप्लीकेट्स है वो कंसिडर करेगा. देन इट विल कंसिडर फॉर बी एज वेल, ठीक है, इट विल कंसिडर फॉर बी एज वेल, राइट. So this is how we can get rid of duplicates values from the data frames, ठीक है, जो भी है. इसके ऊपर अगर मैं लास्ट चला दूं तो लास्ट वाले रखना, ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है, लास्ट. So it will keep the last
एंड जो जो स्टार्टिंग का ये 100 था ये छोड़ देगा। अभी इसने इट केव द सेकेंड 100 बट फर्स्ट वाला छोड़ दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द डेटा फ्रेम गाइस। ठीक है, इट्स वाई हाउ यू कैन रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द डेटा फ्रेम। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? फर्स्ट फिर से एक बता देता हूँ, बहुत बार हमने डेटा चेंज करा है। सो दिस इज माय ए कॉलम में मेरे पास 1 2 1 2 है। ठीक है, आई वांटेड टू कीप समथिंग विच हैव अ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, मेरे पास बी है जिसके अंदर 100 टू टाइम्स है, सी है मेरे पास 4455 टू टाइम्स। कूल। सो व्हेन आई से व्हेन आई से df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स फ्रॉम ए के अंदर से डुप्लीकेट्स ड्रॉप कर दो, बट यू ऑल्सो नीड टू मेंशन कि कौन सा रखना है, फर्स्ट वाले डुप्लीकेट रखना है, सेकेंड वाले डुप्लीकेट रखना है। तो यू कैन से फर्स्ट वाले। तो फर्स्ट में हमारे जो टॉप में आएंगे दोज डुप्लीकेट्स विल स्टे, अदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज विल गेट रिमूव्ड। ठीक है, बट इफ यू से लास्ट, आपके लास्ट वाले रह जाएंगे। सिमिलरली यू कैन रन ऑन 2 columns 3 columns 5 columns also. So for B 100 was 2 times. Okay, so when you say first, it gave the first 100. When you say last, it gave the second 100. Okay, it gave the second 100. So this is how you can uh, drop the duplicates. Okay, this is how you can drop the duplicates. And there is similar function which is duplicated नाम से एक सिमिलर सा फंक्शन है। तो लेट्स से मेरा df ये था, राइट? दिस इज माय df। तो सिंपली इफ आई से df डॉट डुप्लीकेटेड है ये फंक्शन, इफ आई रन दिस, ठीक है, सिंपली अगर मैं कह दूं कि डुप्लीकेटेड, तो व्हाट विल हैपन, लेट्स चेक। तो okay, so it will look for like हर एक कॉलम, it will look for every column like एक कंप्लीट एक कॉलम डुप्लीकेट रहना चाहिए। ठीक है, इट विल लुक फॉर, चलो एक डेटा फ्रेम हमारी जो है इसको फिर से चेंज करते हैं बेस्ड ऑन द एग्जांपल। ये मेरी डेटा फ्रेम थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंप्लीट कॉलम डुप्लीकेट करता हूँ, जैसे 104, इसको 100 और इसको भी 4 कर देते हैं। तो लेट्स चेक, मेरा पास अभी एक कंप्लीट डुप्लीकेट है 104 एंड 104। तो मेरे पास एक कंप्लीट रो जो है, दिस इज नाउ एग्जैक्टली डुप्लीकेट। ठीक है, नाउ इफ आई रन दिस, इट विल से ट्रू, विच दिस वन। तो दिस इज ए डुप्लीकेटेड रो, बाकी डुप्लीकेटेड रो नहीं है। दिस इज व्हाट इट मीन्स कि दूसरा नहीं है इस डुप्लीकेटेड रो। तो इसको आप लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको ये रिमूव करनी है जो भी है डुप्लीकेटेड वैल्यू, ठीक है, यू वांट टू रिमूव दिस, तो आप इसको कैसे ऐसे कर सकते हो, लेट्स ऐड इट इन द डेटा फ्रेम, मतलब लिस्ट में इसको ऐसे रन कर दो। तो नाउ यू गॉट विच वैल्यू जो डुप्लीकेट वैल्यू थी, राइट, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी। तो हमने और एक फंक्शन सीखा, क्या फंक्शन सीखा है, अरे यार इसको इसको मैं अलग से रख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वेट अ मिनट। तो आपको पता चलेगा कि मैं थर्ड रो वाज डुप्लीकेटेड, वो थर्ड रो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो नाउ इफ आई सिंपली से कि इसको और एक ब्रैकेट में डाल के इफ आई ऐड दिस फंक्शन, ये क्या रहता है, दिस, ये छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज दे दो। यू कैन सी ultimately you have something which is not duplicated। ठीक है, which is not duplicated। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो आप, मतलब you can play around it, you can say reset index drop equals to true,
तो 1 2 3 रीसेट इंडेक्स हो जाएगी आपकी। ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू भी नहीं डाला तो भी चलता है, इट विल वर्क द सेम। ठीक है, इट विल वर्क द सेम। इंडेक्स आ ही गया इसके अंदर, ड्रॉप इक्वल्स टू रहने दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यू कैन प्ले अराउंड इट। ठीक है, यू कैन प्ले अराउंड इट। So these are some functions which are related to dropping the column, dropping the values. Okay, dropping the values. Okay, opening for question, anyone, anyone. Okay, some question. Good. So we are giving A means why it's giving B and C. अच्छा, ठीक है. If we don't give keep, then what will keep for drop duplicates? Okay. Let's solve these two questions. So first thing is drop duplicates take it, right? So since we are giving A as a reference, so it will look for A के अंदर का values, but we are asking an entire data frame at the end. ठीक है, so the operation will always work on the entire data frame. ठीक है, the operation will always work on the entire data frame, but particularly we are saying कि work on it. ठीक है, work on it. So this is your answer to first question. So if I run this and if I only say directly df dot drop duplicates, and if I don't mention anything, so it will do nothing because it don't have any direction. Okay, it don't have any direction to which columns do I need to delete. Okay, so if I only say C, if I only say C, so it will do some work, like automatically it will keep the first, but if you want particularly keep the last. ठीक है, C के अंदर क्या डुप्लीकेट है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो. ठीक है, फर्स्ट रो इज डुप्लीकेट, थर्ड रो इज डुप्लीकेटेड. सो दिस इज वाई ये सेकेंड वाला चलेगा, ये वाला चलेगा. ठीक है, दिस वाला. सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉप द डुप्लीकेट वैल्यूज. डुप्लीकेटेड क्या करता है, इट गिव्स यू ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू. ठीक है, बट इट नीड्स एंटायर रो टू बी एग्जैक्टली सेम. जैसे मेरा जीरोथ रो एंड सेकेंड रो वाज एग्जैक्टली सेम. ठीक है, so it gave true here, and when I added in the data frame df dot list के अंदर, तो मुझे ये मिल गया. मैं नॉट ऑपरेटर डाल दिया यहाँ पर, मुझे बाकी एलिमेंट्स मिल गए इसको छोड़कर. ठीक है, इसको छोड़कर. some more. I hope this is clear. Clear, no clear. I hope this is clear. Any questions there, guys? Any questions there? Clear, clear. Cool. So we have 1 minute, but we need to cover PANDAS series, guys. So tell me, अभी 15-20 minutes एक्स्ट्रा लेकर, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं यार. I won't ask you, let me just cover this. Okay, cover meaning you should also understand and should get the understanding. ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट है मुझे बताओ, कुछ भी डाउट है. सबसे पहले हमने क्या देखा, we have seen the merge. ठीक है, merge का बहुत सारा पार्ट हमने कल ही देख लिया था. which part, how, मतलब ये ध्यान में रखना. you need to keep this in your understanding. inner joint जब रहेगा, whenever there will be a inner joint जब रहेगा तो बस कॉमन चीज आएगी. ये आपका लेफ्ट, ये आपका df1 है, ये df2 है, तो कॉमन चीज मुझे मिलेगी. आउटर जॉइंट में मुझे सारी चीज मिलेगी, एंड राइट में मुझे कॉमन प्लस राइट चीजें मिलेगी, लेफ्ट में मुझे कॉमन प्लस लेफ्ट चीजें मिलेगी. इफ यू नो दिस, ऑल द थियोरेटिकल आंसर्स आर डन. आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन द थियरी, इट विल बी क्लियर. सेम अगर इफ वी आर लर्निंग एसक्यूएल आल्सो, द सेम थिंग वर्क. ठीक है, यू विल हैव लेफ्ट जॉइंट, यू विल हैव राइट जॉइंट, यू विल हैव इनर जॉइंट, यू विल हैव आउटर जॉइंट. ठीक है, लेफ्ट जॉइंट, ये चारों के चारों समझ लो, आगे आपको समझ गए. इवन इन विथ रिस्पेक्ट टू एसक्यूएल. ठीक है,
We will learn SQL also in the coming lectures. Then you learn this next assign function. It will assign the values to the columns in the data frame. You also learn pop, which will delete the column. You also learn drop duplicates. So it will drop the duplicates. You can mention two things, which column and how to keep first or last. Okay, these two options this drop duplicates provide. Okay, and duplicated it will give you if you want to check whether in your data set you have a duplicated row. Okay, so row 0 and row 2 was duplicate, exactly same copy. Okay, so you kind of identified using this, and if you want to remove or right drop it, we kind of run similar kind of operation. Okay, similar kind of operation. So let's let me just create one more file and उसके अंदर pandas 10.1 में सीरीज शुरू कर देते हैं. Turn off playground mode. Questions: what happens if we don't write it? So it will automatically consider what it wants to. So I've given one example here. Yeah, I've given one example. Drop duplicates, and I have just given a column. So if you don't even mention a column, it will not understand. Okay, it will let it come. So this is my DF. Okay, then okay. So this is my data frame, and this is my. If you don't mention anything, it will not understand where to work. Okay, where to work. But if I simply mention C के ऊपर चलवा दो, so it will delete the it will keep the first actually. If you mention or not mention, it will keep the first. Okay, it will keep the first. If I remove this one also, it will keep the first, right? Let me keep for your understanding, future understanding. Okay. Not saved program. Why cannot save? New notebook. Let's quickly understand series. Okay. PANDAS 10.1 ऐसे लिख दूँ 0.1 एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं सीरीज. ठीक है, सीरीज लाइक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. ठीक है, let it connect and import oh my import pandas as cd, import for numpy as in. ठीक है, so let's try and understand pandas series. तो हमने पहले सबसे पहले क्या देखा था? pandas डेटा फ्रेम देखा था, राइट? अब तक जितना भी हमने पढ़ा है वो pandas डेटा फ्रेम के अंदर ही पढ़ा है. ठीक है, pandas डेटा फ्रेम के अंदर ही पढ़ा है. pandas डेटा फ्रेम क्या था? 2 डायमेंशनल था, राइट? 2 डायमेंशनल. pandas series is 1 डायमेंशनल. डायमेंशनल. ठीक है, pandas series is 1 डायमेंशनल. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. तो pandas डेटा फ्रेम में हाँ डेटा फ्रेम तो बहुत देखे, राइट? कि इसके पहले हमने जितना भी देखा, these all are data frames. ठीक है, these all are data frames. But how the pandas series look like? ठीक है, how the pandas series look like? So you will say, let's say series 1. Okay, series 1 equals to pd meaning pandas series, and उसके अंदर I will add this 1 to 5,
and it looks like this. Yeah, it looks like this. The data type is integer because all integers are there. Okay, data type is integer. So if I check the type, so I will get क्या आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है, यहाँ पर फोकस करते हैं पांडा स्कोर सीरीज. ठीक है, पांडा स्कोर series, meaning this is a series, this is not a data frame. Okay, this is a series, this is not a data frame. And let me just write this one so you get this series. Okay, you get this series. All right, so how do I add a column name here? Okay, how do I add a column name here? So first हम देखेंगे how to add column name. ठीक है, how to add column name. So first thing first हमने करना है यहाँ पर लिख दो कॉलम. कॉलम आता है क्या यहाँ पर? कॉलम कॉलम यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? So in order to add a column name anywhere, you need to say ये आपका S1 है. Yeah, this is your S1. ठीक है, here इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ. This is how your S1 looks like. So now what you have to say is you have to say S1 equals to pd dot data. अच्छा आ रहा था pd dot name column. Let's check whether it happens or not. Yes. This is how you can add a. You just have to say name and then column name. Okay, name and column name. There can be one more method. Let's say df equals to pd dot data frame. data frame उसके अंदर s1 डाल दो. You run this, you will get the s1. Meaning series को आप 2 dimensional में change करते हैं. And now here, from here you can change column name into whatever you think. Column name equals to uh, new column. ठीक है, column name equals to new column. If you say the new column looks like this, but इसके अंदर values तो नहीं आई है. Okay, new column add हुआ है. New column add हुआ. New column add हुआ है. With the values, आपको values भी देनी होगी. It means, ठीक है, you also need to give a value. Anyways, if you want to add a column, you can add like this. Okay, so this is. I thought we can also convert into the data frame and then you can add. But ये नया column पकड़ है जिसके अंदर अभी के लिए value है नहीं कोई. ठीक है, value है नहीं कोई. So this is how you can do it. Let's say ये आपका series 1 है, अभी के लिए S series 1 है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है. For example, series 1 के अंदर you want to add one more column. अभी के लिए न्यू कॉलम बोल देते हैं. ठीक है, न्यू कॉलम. ठीक है, कॉलम नेम था कॉलम 1 था, कॉलम 2 कर देते हैं. कॉलम 2. ठीक है, एंड यू विल से pd डॉट सीरीज एंड उसके अंदर वैल्यूज कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 थी, हम इसको 11 12 13 14 15 कर देते हैं. ठीक है, 15 कर देते हैं. Now if I say x1, so model has no attribute keys, capital S. So now your column in the row डाल दिया इसने. टाइप column in the row डाल दिया. क्यों? हमने कुछ मेंशन ही नहीं किया. Let's create a new s2 equals to pd dot series. इसके अंदर I will add 1 2 3 and 4. ठीक है, so this is my s2. It will look like this.
Now if I say S2 के अंदर I want to add column, okay, column 1, यहाँ पर I will say pg dot series S2. No, it is adding at a row level. It should add at a field column level, but maybe because of yeah, 1 2 3 4 1 2 3 4 like it is same. I am not sure if these have access because this is not a two-dimensional array to access the honor. Anyways, coming back, pandas dot series. सबसे पहले we must understand pandas dot series is a one-dimensional array. ठीक है, one dimensional not array. It is just one dimensional series बोलोगे. ठीक है. Then we import this. This is how you can create a pandas series. ठीक है. This is how you can create a pandas series, right? And you will, if you want to check the type, you can use the type function जो आपको series दे देगा. ठीक है. It will tell you the series, right? तो यहाँ पर आप देख सकते हो. It is telling you class is core series. Okay. Okay. Second, हमने देखा कि how to add a new column. ठीक है. How to add a new column or rename a column. So I think we could not able to add a new column just because this is not a two-dimensional array. This is not a, इसके अंदर रो add हो सकेंगे because this is a one dimensional. So if we add something, it may become a two-dimensional. So which it does not want to. ठीक है. So अभी के लिए इतने ही चीजें हैं that you want to. In with respect to interview, people will barely ask you to create a series. Okay, people will barely ask you to create a series, but they will definitely ask you the difference between pandas data frame and pandas series. So pandas data frame is a two-dimensional data frame and pandas series is a one-dimensional series that you have to say, and you can give the example like this. You can create anything pd dot data frame is data frame बना दो and plus pd dot series एक series बना दो. So it will have, you can show some differences there. Okay. More than that, it will hardly ask you to add a new column, like change the column name. ठीक है, change the column name, and you can change like this. So this was your old data frame. This is your new data frame. Okay. Okay. Other than this, whenever you want to add a new column or new row, so it will add like this. Instead of this, let me just take only one number. Let's say 11. So now it is looking fine. Column 2, 11 और data type भी add करना है भाई. Can I simply add a row? Yes, like this. और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5. कॉलम अभी ये 5 भी ऐड हो गया. If I say 6 भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर. ठीक है, like this. So this is how it is. Series इतना ही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं. In your career, you will use data frame like anything. Okay, you will use NumPy as anything. Like most of the time, NumPy, data frame, list, you will be using series. Nah, no one uses because इसका इतना काम ही नहीं होता. Mostly industry में you will get the huge data sets like this, and you are asked to work on this. Okay, so that is why also in the series, like there are no more functions that have developed. Okay, so open to questions. Swarm says good morning sir. Good morning Swarm. Open to questions. Two-dimensional meaning, and I think this is done. What is meant by two-dimensional? What is meant by three-dimensional? Two-dimensional meaning अगर हम ऐसे देखें, so this is a plain canvas. ठीक है, this is a plain canvas, but it is not a plane, but it is in a two-dimensional. It has a x-axis, it has a y-axis. ठीक है, it has a x-axis, it has a y-axis. Okay, so when we talk about a data frame is like this.
ठीक है। इट हैज कॉलम्स, कॉलम्स लाइक दिस, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। ठीक है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। So meaning it has axis equals to 0 and axis equals to 1, right? So whenever you look at any data frame like this, okay, this is a simple data frame. It has a columns, it has rows, it has columns, it has rows. So this is why it is called as two-dimensional data frame. Okay, two-dimensional data frame. सीरीज दिस इज लुकिंग लाइक अ डेटा फ्रेम, बट यहाँ पर बस एक ही चीज है, ये इंडेक्स तो बस ये ऑटो इंडेक्स आ रही है, यहाँ पर बस एक ही चीज है, दिस कॉलम, दिस इज ओनली वन डायमेंशनल। तो इन टर्म्स ऑफ नंपाई अगर हम देखें वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल, तो नंपाई के अंदर यहाँ पर आप कोई भी ओपन कर लो लाइक दिस। so so this is a one dimensional number, ये वन डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल मीनिंग यहाँ पर टू लिस्ट आ गई, टू लिस्ट आ गई। सिमिलरली थ्री डायमेंशन भी कहीं पे यहाँ पर हो रहेगा। ठीक है, तो नंपाई में डायमेंशन कुछ अलग रहती है, अलग नहीं मतलब इसका भी मीनिंग वही होता है, बट वो डिस्प्ले के लिए कुछ उस तरीके से दिखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैंडास गाइस। ठीक है, आई विल अपडेट एंटायर, मतलब इसके अंदर मैं सारे ही वीडियोस ऐड कर दूंगा। ओके, इस सीरीज के मतलब इस प्लेलिस्ट के अंदर। Now your job are again in the GitHub, on the GitHub in the folder of pandas. I will add all meaning आज का ही बाकी है, बाकी सारे data sets I have added and all the files from day 1 to day 10 जो आज का चल रहा है। This two files I will add. Okay, these two files I will add. Now your job is to work on assignment. ठीक है, तो मैंने असाइनमेंट ऐड नहीं की है, बट एंड ऑफ द डे मैंने असाइनमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दी है, सो आई विल ऐड एन असाइनमेंट हियर। सो नाउ योर जॉब इज टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट। ठीक है, कंप्लीट दैट असाइनमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट कि अब तक मुझे जितने भी पांडास के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन आए हैं, विच एवर इंटरव्यू क्वेश्चन दैट आई गॉट, मैं वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चन उसके अंदर डालूंगा। I will add all the interview questions. So remember this, this assignment is going to be very important in terms of interview questions. So interviewer will ask you first very simple question that will be related to OOPS concepts or string or list. It will ask you difference between list and tuples, things like that. So when you will answer those questions, it will go to the next level, that is pandas, और फॉर लूप पूछ लेगा और उसके बाद पांडास पूछ लेगा। ठीक है, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बिकॉज इफ यू क्लियर दिस pandas का क्वेश्चन, you will like interviewer will not ask you more Python questions. So this will be your last step of clearing the interview in terms of coding। ठीक है, इसके बाद वो डायरेक्टली एसक्यूएल का क्वेश्चन पूछ देगा या फिर कुछ और। ठीक है, so we will prepare for that also, but in terms of Python coding, pandas का एक या दो क्वेश्चन will be there for sure। ठीक है, will be there for रेगुलर एक्सप्रेशन का मोस्टली नहीं पूछते हैं, बट प्रैक्टिस बेस उप्स का आएगा ही आएगा, नंपाई पांडास के अंदर ही यूज होगा, बाकी इस पे इनिशियल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, so I will add assignment। So now tell me when SQL also can you teach us? Yes, Shivapriya, I will teach SQL also। ठीक है, either I will teach or I will bring some teacher। ठीक है, so tell me कितना दिन चाहिए आपको, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, टू कंप्लीट द असाइनमेंट। ठीक है, एवरीवन जस्ट लेट मी नो, पीपल फ्रॉम द यूट्यूब, अगर आपको भी असाइन 3 दिन कुछ, if अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो ग्रुप में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और अदरवाइज इस पोस्ट में भी यहाँ पर मिल जाएगा. इफ यू आर न्यू, you want to start again, so there is another batch in the evening. ठीक है, इवनिंग बैच भी है हमारी. तो इट इज एट 9:30 PM. इवनिंग बैच के अभी तक 10 लेक्चर हो चुके हैं. अभी ये मॉर्निंग बैच के ऑलमोस्ट 61st लेक्चर है ये. 60, तो 2 महीना तो ऑलरेडी हो गया. ठीक है, तो ऐसे 3 days, तो 3 days फ्रॉम नाउ 14th को. ठीक है, 14th को आपको देना है. 14th June is the deadline for pandas assignment. ठीक है, मैं बस इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. एंड लेट मी जस्ट पिन दिस वन फॉर 7 days is fine. Continue. Cool. So that is for today. If you have any questions, let me know. If you have any questions, let me know. If you have understood everything, type in the comments so that I will get an idea whether you've got everything. If you have questions, the window is open. Win, cool, win, cool. If you have any questions, the window is open, guys. तो आज प्रैक्टिस करो गाइस. ठीक है, कंप्लीट पाइथन, कंप्लीट पैंडास प्रैक्टिस करो. कंप्लीट पैंडास. तो असाइनमेंट में तो हो ही जाएगा, बट कंप्लीट पैंडास. Some more seconds. Anyone? No questions? Yes questions. Good. Alright guys. So if you still have any questions, drop in the group or you can message me directly on the WhatsApp. See you tomorrow or in the evening batch में 9:30 को. और जो मॉर्निंग में है वो इवनिंग सेशन आ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए. वी आर लर्निंग फॉर लूप. ठीक है, फॉर लूप पढ़ेंगे आज. Otherwise, see you tomorrow. I think the time is up for the questions. Okay. No questions. All right. Bye bye. Have a good day, guys. Questions. Any questions related to career also is welcome. Okay. Okay. Cool. Closing the stream, guys. See you.